Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Arush Fatima and my group members are Rabia Ansari, Aksar Riaz and Kainat Rasool. This is the project on the topic poverty. We took national and international articles and then we compared both the articles, finding the differences and similarities and gave the recommendations. The topic of my presentation is poverty. So basically, what is poverty? According to the World Bank Organization, poverty is hunger, poverty is lack of shelter, poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not having access to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear over the future, living one day at a time. Poverty can also limit access to educational and employment opportunities, which further contributes to income inequality. Unmet social needs, environmental factors, and barriers to accessing healthcare and contributes to worse health outcomes for people with lower incomes. In short, poverty is about not having enough money to meet basic needs, including food and clothing and shelter. Numerous factors contribute to the concept of poverty, including political, economical, social, and cultural forces. Poverty entails more than lack of income and productive resources to ensure sustainable livelihoods. Its manifestations and influences hunger, malnutrition, limited access to education. Global poverty is one of the present problems that the world is facing today. Poverty is not just a problem of one person but of the whole nation. सो पॉवर्टी बेसिकली जिसका मतलब गुर्बत है उसका उसकी बहुत सी तारीफ़ों के बावजूद एक बात यकीनी है कि गुर्बत एक बहुत ही पेचीदा माशरती मसला है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गुर्बत की तारीफ़ कैसे की गई है या किस तरह की गई है, लेकिन इस बात पर इत्तेफाक किया जा सकता है कि गुर्बत एक ऐसा मसला है जिस पर हर किसी की तवज्जो की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि हमारे माशरे के तमाम लोग मिलकर काम करें ताकि हमारे तमाम लोगों को उनकी मुकम्मल सलाहियतों तक पहुँचने के मौक़े फ़राहम हो सकें। ये हम सबको एक दूसरे की मदद करने में मदद करता है। इसके बाद आ जाता है पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो पॉवर्टी इज़ अ सिग्निफिकेंट एंड सेंसिटिव इशू दैट अफेक्ट्स मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड. It is characterized by inability to meet basic needs, lack of control over resources, and the need of protection, education, freedom, and a voice. There are many causes of poverty in Pakistan. For example, lack of good jobs, lack of good education, warfare or conflict, weather or climate change, social injustice, lack of food and water, lack of infrastructure, lack of government support. But the main cause of poverty in Pakistan is the rate that affects many Pakistanis lack basic human rights. Then crimes and violences are the direct effect of poverty in Pakistan. The most common form of trafficking in persons is violence, which is largely driven by poverty. According to a survey, most poor men violate their wives for income. Thank you. This is all from my side. Now, Rabia Ansari will continue. Our next topic is factors of poverty. The first one is economic mismanagement. Economic mismanagement is one of the major factors contributing to poverty in Pakistan. The government has failed to implement policies that promote economic growth and stability. गुर्बत से निपटने के लिए सिर्फ पॉलिसीज़ का बनाना ज़रूरी नहीं होता, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी फुट स्टेप्स लेनी चाहिए. जब तक हम उन पॉलिसीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते, हमारा कंट्री कभी भी पॉवर्टी से निजात हासिल नहीं कर सकता. This is a graph that shows the poverty rate in Pakistan from the year 1998 to 2019. On x-axis we have measured year and on y-axis we have average of poverty rate. Blue line represents the poverty rate in overall Pakistan. Orange line represents the poverty rate in urban areas of Pakistan, while green line represents the poverty rate in rural areas of Pakistan. Poverty rate. The poverty rate in Pakistan is relatively high. According to the latest available data, around 24% of the population lives below the national poverty line, which indicates a lack of access to basic necessities such as food, shelter, healthcare, and education.
पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में से 24% पॉपुलेशन ऐसी है जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी बसर करी है। उनके पास अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जिसमें हमारा फूड और शेल्टर बेसिक है। रूरल अर्बन डिवाइड। देयर इज़ अ नोटेबल डिस्पैरिटी इन द पॉवर्टी लेवल्स बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. Poverty is more prevalent in rural regions where agricultural productivity and infrastructure are often limited, leading to lower incomes and a lack of economic opportunity. पाकिस्तान के शहरी इलाकों में देहातों की निस्बत गुर्बत ज़्यादा है, जबकि शहरी इलाकों में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर होती हैं. Lack of access to education and job opportunities. It is also one of the major factors contributing to poverty in Pakistan. Many citizens, particularly those living in rural areas, do not have access to equal education, which limits their ability to find well-paying jobs. शहरी इलाकों में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ज़्यादा तालीम नहीं है, जिसकी वजह से उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती. Rising food prices. Studies highlighted that trade liberalization also acts as a contributing factor that rises food prices and increases global poverty. Over the past 50 years, food prices in Pakistan have reached unprecedented levels, leading to a food crisis in the country. Unequal distribution of land. Lack of access to land for agriculture is also an important factor that adds to poverty. Pakistan has a high level of poverty in rural areas where most of the poor population lives. पाकिस्तान के शहरी इलाकों में गुर्बत का तनासुब पाकिस्तान के देहाती इलाकों से ज़्यादा है, जबकि शहरों में देहातों से ज़्यादा बेहतर सहूलियात फराहम की जाती हैं. Unemployment and underemployment. A lack of employment opportunities, particularly in rural areas, contributes to poverty. क्योंकि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में आबादी ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, ये भी गुर्बत की एक बड़ी वजह है. Education and health challenges. Limited access to quality education and health care exacerbate poverty in Pakistan. Illiteracy rates are higher in rural areas, which hamper skill development and employment prospects. पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती. इसके अलावा इलिटरेसी रेट भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है स्किल डेवलपमेंट ना होने का. पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, जबकि हमें जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, हमें जॉब क्रिएटर्स चाहिए. Gender inequality. Gender inequality is a significant factor contributing to poverty in Pakistan. Women face systematic barriers in accessing education, employment and healthcare, limiting their opportunities for economic empowerment. पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है. मेल्स को फ़ीमेल्स पे प्रेफरेंस दी जाती है. अगर कोई लड़की ये कहती है कि वो तालीम हासिल करेगी या वो जॉब करेगी, तो उसको नेगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म बन गया और ये चीज़ गलत है. सोशल सेफ्टी नेट्स. द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स टू एलिवेट पॉवर्टी. These programs aim to provide direct cash transfer, subsidies and support for education and health care to the vulnerable populations. Climate change and natural disasters. Pakistan is vulnerable to the impacts of climate change, including extreme weather events such as floods, droughts and heat waves. These events can destroy crops, livestock and infrastructures, leading to increased poverty among rural communities heavily reliant on agriculture. बहुत सी कुदरती आफात भी गुर्बत का बाइस बनती हैं. जिस तरह सैलाब आते हैं तो वो जो फसलें खड़ी की होती हैं अभी या जो काश्त की जा रही होती हैं, वो सब अपने साथ बहा के ले जाते हैं. जिन चीज़ों का पहले से स्टॉक पड़ा होता है उसको भी अपने साथ बहा के ले जाते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं. इसी तरह अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हमारा फ्रूट गलना सड़ना शुरू हो जाता है. फिर जब हम अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते तो हम वही चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमें डबल ट्रिपल प्राइस पर सेल करते हैं, एंड इट ऑटोमेटिकली शिफ्ट टुवर्ड्स. Assalamu alaikum. I am Aksa and here I am talk about poverty and youth of Pakistan. Poverty has a significant impact on the youth of Pakistan, with a large portion of young people experiencing the effects of poverty. Poverty पाकिस्तान की यंग जो जनरेशन है, जो यूथ है आने वाली, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है. ख़ास करके जो यंग पीपल है वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको एक्सपीरियंस कर रही है अपनी लाइफ में. हियर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स रिगार्डिंग पॉवर्टी एंड यूथ इन पाकिस्तान. There are some specific points of poverty and youth in Pakistan.
The first one is demographic challenge. Pakistan has a young population with a significant portion of its population consisting of young people under the age of 30. पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें जो अंडर 30 की एज में लोग आते हैं वो पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं. एक नॉर्मल जो लोग फेस कर रहे थे उसमें उससे ज़्यादा जो एज 30 की होती है उसमें लोग पॉवर्टी को बहुत फेस कर रहे होते हैं पाकिस्तान में. एंड द सेकेंड वन इज़ limited access to education. Poverty restricts access to quality education for many young people in Pakistan. जो गुर्बत है वो जो अच्छी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसको वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है पाकिस्तान में. लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर फैमिलीज़ टू अफोर्ड स्कूल फ़ी, बुक्स, यूनिफॉर्म्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. जो उनके लोगों के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब वो उसमें अपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसी को पूरा कर सकते हैं. उसके अलावा वो बच्चों की जो स्कूल की फ़ी होती है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बुक्स होती हैं उनका लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के खर्चे हो जाते हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मुहैया कर सकते. लेक ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग. मैनी यूथ इन पॉवर्टी लेक द नेसेसरी स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू सिक्योर डिसेंट एम्प्लॉयमेंट. जो अच्छी स्किल्स होती हैं एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए, और जो ट्रेन होती है अच्छी जॉब के लिए, वो लोग नहीं हासिल कर सकते जितनी उनकी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको लेकर. इसलिए उनको जो है इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी हासिल नहीं कर सकते. Assalamu alaikum, my name is Kainat Masood. Today I will teach you how to overcome poverty. Poverty is a complex and multifaceted challenge that requires comprehensive strategies and efforts from various stakeholders. While there is no one-size-fits-all situation, here are some key approaches that can contribute to poverty reduction. Education and skill development. Investing in quality education and skill development is crucial for poverty alleviation. Access and affordable education, including both formal and vocational training, equips individuals with the knowledge and skill needed for better job opportunities and economic empowerment. Employment and job creation. Fostering and enabling employment for job creation is essential. This can be achieved through supportive economic policies, promoting entrepreneurship, attracting investment, and providing access to credit and financial services for small businesses. Social protection and safety net. Implementing social protection programs and safety net can provide a safety net for the most vulnerable individuals and families. These programs may include cash transfer, food subsidies, healthcare provisions, and targeted assistance for specific groups such as children, elderly, and disabled individuals. Infrastructure development. Investing in infrastructure, including transportation, energy, water, and sanitation, is crucial for poverty reduction. Improved infrastructure enhance access to market, employment opportunities, education, and healthcare services, fostering economic development and social well-being. The next one is women empowerment and gender equality. Promoting gender equality and empowering women is a fundamental component of poverty reduction. Ensuring women's access to education, healthcare, economic opportunities, and decision-making position can contribute to break the cycle of poverty and creating more inclusive societies. Sustainable agriculture and rural development. Enhancing agricultural productivity, promoting sustainable farming practices, and improving rural infrastructure can boost income and reduce poverty, particularly in countries with significant rural populations. Access to healthcare and social services. Ensuring affordable and accessible healthcare services, along with basic social services such as clean water, sanitation, and housing, is essential for poverty reduction. The second last is good governance and institution.
Promoting transparency, accountability, and good governance is crucial for poverty reduction. Effective institutions, the rule of law, and anti-corruption measures create an environment that fostering economic growth, social inclusion, and equitable resources distribution. The last one is international cooperation and aid. International cooperation, development assistance, and partnership play a significant role in supporting poverty reduction efforts. Collaborative efforts between governments, multilateral organizations, civil society, and the private sector can leverage resources, expertise, and best practices to address poverty at a global level. Thank you so much for listening us.